Hi friends, welcome to the next part. So in wetlands we have seen introduction, coral reefs. Now we will go for mangroves. What we are going to learn here? First, what are mangroves? What are characteristics of mangroves? What are functions of mangroves? And important mangroves कहाँ पे है? And what is mangroves for the future? First, what are mangroves? Mangroves are shrubs or small trees that grow in coastal, saline or brackish water. कोई याद रखने की जरूरत नहीं, पिक्चर से आपको समझ में आया होगा. जहां कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर में जो ग्रो होता है स्मॉल ट्रीज और श्रब्स, दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. गेटिंग मी? सी दीज डेफिनेशंस एज इट इज, मैंग्रोव्स आर श्रब्स आर स्मॉल ट्रीज, श्रब्स आर स्मॉल ट्रीज. ऐसा जो बचपन में पढ़ा है ना 8th 10th क्लास में, ये चीज अभी मत करिए. क्या काम का है आपको पता है? आपको दे आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर में रह रहे हैं. अगर सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होगा तो सॉल्ट वाटर में रह नहीं पाएगा. दे कैन नॉट ग्रो इन दिस काइंड ऑफ ब्रैकिश और सैलिन वाटर. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोफाइट्स. ये वर्ड माइंड में रखना. सो दे आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज, आल्सो कॉल्ड हैलोफाइट्स, and are adapted to life in harsh coastal conditions. यहाँ क्या होता है, कभी टाइड्स बहुत फोर्सफुल हो सकता है, तब भी दे आर ऑल अडॉप्टेड, दे विल नॉट गेट अपरूटेड. सो दैट्स व्हाई दे आर अडॉप्टेड टू दैट काइंड ऑफ कोस्टल कंडीशंस. ओके, हैलोफाइट्स छोटी एग्जाम्स में पूछता है ऐसा क्वेश्चंस. हैलोफाइट्स कौन सी ट्रीज को बोलता है, या कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो कॉल्ड हैलोफाइट्स? कोरल रीफ्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट. ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, यूपीएससी की लेवल का नहीं. Got it? Their small trees grow in coastal saline or salt water, brackish water. Their salt tolerant trees also called halophytes. Okay, they are adapted to adjusted to harsh conditions of coastal climate. Got it? What are characteristics? Just 4 चीज माइंड में रखना. One is adaptation to low oxygen. इसी ये मगअप करने वाली चीज नहीं है. अगर नीचे सारे पानी होगा तो हाउ दे गेट एयर? सो दोज रूट्स विल प्रॉप आउट ऑफ द वाटर, सो to certain height, and they get air, so they are adapted to that kind of low oxygen kind of conditions. Limiting salt intake, their roots are made in such a way while they absorb water, so उस पे salt है, they take less salt, they limit the intake of salt. सिमिलरली लिमिटिंग वाटर लॉस, जो अब्जॉर्ब करने के बाद वाटर उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो द लीव स्ट्रक्चर विल बी इन सच ए वे दैट दे कैन लिमिट वाटर लॉस. सी नो नीड एट ऑल, जस्ट एक बार सुन लिया और भूल जाइए. लो एडाप्टेशन, लो ऑक्सीजन में एडाप्टेड है, लो ऑक्सीजन कंडीशंस को. सेकंड, लिमिटिंग सॉल्ट इनटेक, द रूट्स आर मेड अकॉर्डिंगली. लिमिटिंग वाटर लॉस, द लीव स्ट्रक्चर विल बी अकॉर्डिंगली. सिमिलरली इंक्रीजिंग सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग. सपोज यू सी, जो सीड जैसे जनरल प्लांट को क्या होता है, सीड नीचे गिरने के बाद प्लांट बनता है. अगर इस केस में ऐसा होगा तो वे सीड जब नीचे गिर गया उसके बाद वे टाइड्स के साथ वे एक जगह रह नहीं पाएगी, तो वे चलता रहेगा, तो इट कैन नेवर बिकम ए प्लांट. दैट्स व्हाई वे प्लांट पे रहने टाइम पे ही इट विल बिकम कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन इट विल ड्रॉप into the sand, into the, तब वे नीचे गिरेगी. so that जब से गिरा तब से it can make its own food by photosynthesis, तो that's why it can survive. but आपको इतना डीप में कोई काम का नहीं है, because we are not doing any research on it. just इतना माइंड में रखना है, mangroves are small trees grow in coastal saline or brackish marine water. They are also called halophytes. They have certain characteristics like they can adjust to low oxygen, their roots limit the intake of salt, and their leaves will limit the water loss, and their survival of offspring. That means the seeds germinate on while they are attached to the parent tree only. Then they fall down. Once they fall down, they can do their own photosynthesis. That's sufficient for you. इवन ये बहुत ज्यादा बोला मैंने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना चाहिए नहीं आपको. नेक्स्ट, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मैंग्रोव्स?
Functions means benefits. One main important thing you must know is shoreline protection, because they have extensive roots. You can see in the picture, their roots are so much and they are too strong, they are deep, they will not get uprooted even whatever is the force of the tide. That's why even in tsunami, if you see in Tamil Nadu, one village which have the mangrove forest, that village has got minimum damage with the tsunami, because these roots, they can protect the shoreline, because these roots are very strong and they will not get uprooted. That is the main purpose. Getting what I mean? Next, their breeding grounds. That's why if you see Bhitarkanika, breeding ground of olive ridley turtles. So that's why it is very useful. And if used wisely, they also provide certain kind of timber. ये कोई काम का नहीं. So इतना याद रखे, strong roots so do not get uprooted, so protect the shoreline and breeding grounds. These are two very important functions. Next, important mangroves कहाँ पे है? अगर जनरली बात करें 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ के बीच में ये लैटिट्यूड्स में ज्यादा होता है. दैट मींस अगेन इन ट्रॉपिक्स. नॉट ओनली, सपोज ऐसा स्टेटमेंट आता है मैंग्रोव्स आर फाउंड ओनली इन ट्रॉपिक्स, गलत है. दे आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिक्स, सही है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द मैंग्रोव्स आर इन एशिया. सो एशिया हैज द लार्जेस्ट अमाउंट, दैट इज 42% ऑफ द वर्ल्ड, followed by Africa. No need of knowing each and everything. ऑर्डर मात्र याद रखना, जस्ट इतना रह के एशिया में सबसे ज्यादा है. आपका बात, आपका काम चल जाएगा. अगर मैं इंडिया की बात करूं, स्टेट वाइज बात करेंगे, सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल. नो नीड टू रिमेंबर द कितना स्क्वायर किलोमीटर वगैरह. सो द मैक्सिमम कवर ऑफ मैंग्रोव कवर इज इन वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय गुजरात. बस दो याद रखें, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात. वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स, देन गुजरात में. गुजरात ये सारे प्लेस, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबत, वे सारे मैंग्रोव्स है. गेटिंग मी? सुंदरबंस, इंपॉर्टेंट मैंग्रोव्स कहां पे? सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. दिस इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट. सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया इज भितरकनिका. इसी स्टेट वाइज तो गुजरात बड़ा है, गुजरात में बहुत सारे मैंग्रोव्स है, बट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मैंग्रोव्स की बात करूं, भितरकनिका इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया. दिस इज इन ओडिशा. यू नो दैट टू रिवर डेल्टा, टू रिवर्स, ब्राह्मणी एंड बैतरनी, ऑलरेडी वी हैव सीन इट, एंड salt water crocodiles, olive ridley turtles and gharial. Then Godavari Krishna mangroves in Andhra Pradesh. Godavari delta, Krishna delta पे भी mangroves है. Godavari Krishna mangroves आंध्र प्रदेश में. Then Pichavaram mangroves in Tamil Nadu, Gulf of Mannar, Pichavaram. We have Baratang Island mangroves in Andaman, Andaman Nicobar में Baratang mangroves. They are situated between middle and south Andaman. ये कोई इतना मगब करने की जरूरत नहीं, बट रेयर केस में कहीं पूछेगा तो मिडिल एंड साउथ अंडमान के बीच में है. वे बाद में मैप में देख लेंगे. सो अंडमान एंड निकोबार में बारातंग आइलैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गल्फ ऑफ कच्छ. सो गल्फ ऑफ कच्छ में यू हैव गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबत, यहाँ मैंग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है. दैट्स व्हाई यहाँ मैराइन नेशनल पार्क बनाया है कच्छ रीजन में. ये नेशनल पार्क टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी कोई टेंशन मत लेना. सो दिस इज फॉर हैविंग यूनिक कोरल रीफ्स एज वेल एज मैंग्रोव्स. मैराइन नेशनल पार्क ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ. सिमिलरली गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क. गॉट इट? सम अदर स्मॉल मैंग्रोव्स की बात करें, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र. सिमिलरली गोवा में चराव आइलैंड, चराव आइलैंड गोवा में, एंड कुंदपुर इन कर्नाटका. सिमिलरली वेम्बनाड, वेम्बनाड में भी मैंग्रोव्स है, वेम्बनाड इन केरला. दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्मॉल मैंग्रोव्स. रत्नागिरी, चराव, कुंदपुर एंड वेम्बनाड. गॉट इट? सो दीज आर इंपॉर्टेंट मैंग्रोव्स. व्हाट इज मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर? मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर इज ए यूनिक पार्टनर लेड इनिशिएटिव. एक बहुत सारे पार्टनर्स पैसा कंट्रीब्यूट करेगा टू प्रोटेक्ट दीज मैंग्रोव्स. ओके, सो दिस इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ
partner-led initiative to promote investment in coastal ecosystem conservation for sustainable development. Different countries में partners का मतलब who are the partners, maybe NGOs and all, like वे सारे मिलके, many NGOs मिलके, even governments could also be part of that. Okay, who will give the money, who will contribute? Again, NGOs, individuals, private firms, anybody can contribute, right? So it is working in 11 countries. No need to mug up कितने countries में कर रहा है वगैरह. So India is one of them. Mostly ये Southeast Asian and South Asian countries में काम कर रहा है. India is one of the country. It is working. No need to remember in which countries it is working. ये ना न्यूज में है ना कोई important है. Just mangroves for the future. एक word याद रखिए. India is also, India में भी ये काम कर रहा है to protect the mangroves, and it is being coordinated by IUCN. बस इतना माइंड में रखिए. So it is a partner-led initiative. IUCN is coordinating it. It is operating in 11 countries, including India. काम खत्म. इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको. ये भी बेकार है, वैसा बताया मैंने. I'll just read. Don't try to mug up. एक कहीं नहीं पूछने वाला, ना मेंस में ना प्रीलिम्स में. Okay. Mangroves for the future have two objectives. One is to strengthen the environmental sustainability of coastal development. Obviously, mangroves and coral reefs are part of coastal areas. So, coastal development ka environmental sustainability. Second is to promote the investment of funds and effort in coastal ecosystem management for sustained development. So, obviously, to strengthen and to promote coastal areas. That is कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आएगा. इसको स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, याद रखने के लिए. बट आई नो दैट सम ऑफ यू व्हाट यू डू, यू टेक इट टू सीरियसली बिकॉज यू बैडली वांट टू बिकम IAS ऑफिसर एंड यू स्टार्ट मगिंग अप. दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. यू नीड टू प्रिपेयर वाइजली. वे क्या करेंगे हमको? जस्ट मैंग्रोव फॉर फ्यूचर नाम ही नहीं सुना तो अलग बात है. नाम तो सुनाना आपको मेरा काम है. मैंने सुना दिया, इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं. गेटिंग मी? Now let me summarize what all we have seen. So we have seen what are mangroves. They are small trees that grow in coastal saline or brackish water. They are salt tolerant trees. That's why also called as halophytes. What are their characteristics? Adapted to low oxygen, limiting salt intake, the roots are made accordingly. Limiting water loss, the leaves are made accordingly. And increasing survival of offspring. So the seeds will not fall until they will germinate on the plant, on the tree itself. Once they drop onto the ground, they are capable of their own photosynthesis. They can make their own food. That is sufficient. Then what are the functions? Like they protect shoreline, very important, because they have extensive roots which are very strong, will not get uprooted. Then they are breeding grounds, again very important, and it can be used for timber. And even carbon sequestration, like the carbon dioxide which you are releasing, they absorb, so carbon content in the atmosphere can be reduced, which is the concern now. वे हम बाद में देखेंगे unit 4 में. Then what is MFF? Mangroves for the future. So it is a unique partner-led initiative. Second is coordinated by IUCN. It is being operated in 11 countries, including India. Kaam khatam. And where are important mangroves? Sundarbans, which is the largest in the world, West Bengal में है. भितरकनिका, second largest in India. यहाँ 2 rivers है, ब्राह्मणी, बैतरणी, and salt water crocodiles वगैरह. देन गोदावरी कृष्णा आंध्र प्रदेश में है. देन पिच्चवरम गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है. बारातंग अंडमान में है, बिटवीन मिडिल एंड साउथ अंडमान. गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है, यहाँ मैंग्रोव्स भी है और कोरल रीफ्स भी है, इवन गल्फ ऑफ मन्नार में भी. एंड स्मॉल लाइक रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, छोराव आइलैंड इन गोवा, कुंदपुर इन कर्नाटका, वेम्बनाड इन केरला और सम अदर एग्जांपल्स. लक्षद्वीप में कोई मैंग्रोव्स नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज. अंडमान में कम से कम कोरल रीफ्स भी है, मैंग्रोव्स भी है, बारातंग एक मैंग्रोव. लक्षद्वीप में बिल्कुल नहीं. होप यू अंडरस्टैंड. और भी बात करें, दे आर मेनली बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ नियर ट्रॉपिक्स. एशिया में सबसे ज्यादा है. एंड इंडिया का कवर भी बात करें, 3% ऑफ मैंग्रोव कवर इज इन इंडिया. अगर ऐसा कहीं स्टेटमेंट आता है, इंडिया इज ए होम, इंडिया कंटेन मोर देन 10% मैंग्रोव कवर ऑफ द वर्ल्ड, गलत है. इसमें सिर्फ 3% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव कवर इज इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया इट इज गुड. वी हैव ओनली 2.4% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट 3% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव्स आर इन इंडिया, विच इज रिच.
Got it? This is what. Even state wise बात करें, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, followed by Gujarat, then Andaman, Andhra Pradesh, Odisha, like this. But West Bengal, Gujarat, at least दो याद रखिए. Second is not Odisha. Bhitarkanika is the second largest mangrove independently, but second highest mangroves in which state? Gujarat. Hope you understand this. So this is about this. There was a question in 2011. Already we have seen these two important rivers, one with a source in Jharkhand, and we have already seen this in the last topic. So this is Bhitarkanika area. You remember Brahmani and Baitarni river? They are in Bhitarkanika mangrove. And there was a question in 2011 again. So 2004 tsunami made people realize that the mangroves can serve as reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? Let's look at the options. कॉमन सेंस से आंसर हो जाएगा. द मैंग्रोव स्वैम्प्स सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम द सी बाय अ वाइड जोन वेयर पीपल नेदर लिव नॉर वेंचर आउट. व्हाट डज इट मीन? The mangroves provide both food and medicines which people are in need of after any natural disaster. This is meaningless. After natural disaster, mangroves provide food. No, they don't provide any such food. Mangrove trees are tall with dense canopies and serve as an excellent shelter during a cyclone or tsunami. साइक्लोन और सुनामी है तो घर पे भी नहीं रह पाएंगे तो मैंग्रोव्स में क्या करेंगे? ये शेल्टर नहीं प्रोवाइड करते. शेल्टर इज नॉट द राइट वर्ड. द मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट uprooted by storms and tides because of their extensive roots. This is the correct word, correct keyword. Since they have extensive roots, so they do not get uprooted, so they cannot advance the tides or tsunami waves into the adjoining areas. So that is the main answer. So this is the answer. Are you getting me? Rest of the options are बकवास है. आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, पाँच करके आपको समझ में आएगा. Getting me? So this is all what you need to know about mangroves. So with this we have completed environment part 2, introduction to wetlands, coral reefs and mangroves. Okay? It is very easy exam. I am telling again and again. Trust me.